let's start the class. So let's start with the question number 1. Here's the question. Your time starts now. Yep, solve this question. 6 playing cards are lying face down on a table. 2 of them are kings. 2 cards are drawn at random. Let A denote the probability that at least one of the cards drawn is a king, and B denote the probability of not getting a king. The ratio A divided by B is how much? Hello, Shubham. Yeah, good to see you on time. Yeah. So solve this question, find out the answer. So it's a probability question. You can think A divided by B is how much. Do not get on the options, okay? Just find the value, and whatever value satisfy in the particular range, that would be your answer. Basically, is that almost give all the answers in some type of range. So we just have to actually find the actual value that we used to find. So have you done the answer? Or do you require more time? Yes, which option is correct according to you? So let's start the question now. So in this particular question, we are given that there is a probability of A and probability of B, where A stands that at least one of the cards is a king, and B denotes the probability of not drawing a king. So it is like anti opposite to each other. Sorry, anti to each other and opposite to each other. We can say that A is at least one king is there, and B is no king is there. So their addition always equal to 1. It is at least 1. It is no king. So this is like a complete A union something. So we can say their combined probability equals to 1. We have to just find the value of A divided by B. So that can be found if I divide the complete equation. We have to find this A by B.
So if I divide this by b, I will get this thing, and I can say the required thing can be found if I find this b value. Basically, I do not have to find a value, or I can also find a value. There is no harm, but I can find b value, whatever is convenient. So b is what? B is no king is there. So you have to just find the probability that out of 6 cards, 2 are king, and we require no king. So basically, we require no king. So those 4 cards having no king, we have to select 2 cards. This is 4c2 over 6c2. This is the probability. And this is how much it is, 6 over 15. That's 3 by 5. So if I plug this value here, it is 1 by b. Okay, it is 1 by b. It would be, sorry, it is going to be negative. I did some mistake here. This is 1 by b minus 1. Yeah, calculation mistake. So this is 1 by b, that is 5 by 3 minus 1, which is 2 by 3. Again, calculation mistake. It is 2 by 5. What I am doing here. So it is 5 by 2 minus 1. That's 1.5. So which option is having 1.5? Greater than 1? Option number E. So that's our answer. D लग रहा है. आया समझ में सॉल्यूशन? इज द सॉल्यूशन क्लियर? आप ए भी कर सकते हो सॉल्व, बी भी निकाल सकते हो. इट इज अप टू यू, है ना. ए क्या हो जाएगा? किंग आना चाहिए हमारे पास. तो जब किंग ना आने के 2/5 तरीके हैं, तो किंग आने के कितने हो जाएंगे? 3/5. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. हाँ, ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में. बताइए इसका आंसर. होमवर्क नहीं करा है. Suresh, who runs a bakery, uses a conical shaped equipment to write decorative labs. That is, example, happy birthday, using a cream. The height of the equipment is 7 and the diameter is 5. A full charge of the equipment will write 330 words. How many words can be written using 3/5 of a liter of a cream? अच्छा, पी वाई के कर रहा था जो, सो इसमें ऐसे मत करो. क्वेश्चन के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है वो. ठीक है. ठीक है, क्वेश्चन होमवर्क का था. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ. तो अब यहाँ पे उसने बोला कि कॉनिकल शेप्ड है, मतलब इट इज़ लाइक, आप ऐसे सोचो कि वो जैसे हैप्पी बर्थडे लिखते हैं तो एक कौन सा होता है ना उनके पास, उसमें क्रीम होती है, तो उससे फिर वो लिखते हैं हैप्पी बर्थडे. तो दैट इज़ लाइक द सेम थिंग. जहाँ पे आपको हाइट पता है 7 सेंटीमीटर, और
डायमीटर पता है, तो वी नो दी वॉल्यूम बेसिकली, वी विल नो दी वॉल्यूम, दैट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस हो जाएगा मेरे लिए 2.5, एंड यूनिट का ध्यान रखो ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में, सो यूनिट इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे मुझे, मैं सेंटीमीटर में बना लेता हूँ, तो मैं ये इसको 0.25 लिख रहा हूँ। दिस इज 0.25 पाई आर स्क्वायर एच, द हाइट इज 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। इससे हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, 330 वर्ड्स। आई कैन राइट दिस मैनी वर्ड्स फ्रॉम दिस थिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप 3/5 ऑफ अ लीटर, लीटर को 3/5 करना है, उससे कितने वर्ड्स को लिखा जा सकता है। सो एक कन्वर्जन याद रखना है ये, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इन 1 मीटर क्यूब दिस देर इज कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर्स, ओके। और 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर होगा। सो बाय दीज टू रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट इज समथिंग लाइक दिस, कि 1 लीटर में इसको हम मैं प्लग कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इट इज 100, दैट इज 10⁻², उसका होल क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू 10⁻³ लीटर। सो 1 लीटर correspond to 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। दिस इज द कन्वर्जन दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 3/5 ऑफ अ लीटर, 3/5 ऑफ अ लीटर। तो 1 लीटर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, विच विल गिव मी 200 and 600 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली। तो ये पूछ रहा है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब से 330 वर्ड्स हैं, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब से कितने होंगे, हाउ मेनी वर्ड्स वुड बी देयर। So the answer would be what? It is just a calculation part now. तो 330 वर्ड्स हमें एक में कितने आएंगे, तो इससे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, 3 ऊपर चला जाएगा, और 600 सेंटीमीटर क्यूब के लिए चाहिए। तो व्हेन आई फाइंड दिस वैल्यू इट इज समथिंग 4 लाख समथिंग, सॉरी 43 लाख, मतलब इसका जो आंसर आता है दैट इज नन ऑफ द अबव, 43 समथिंग 2 1, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट श्योर, कुछ ये बनता है। पता नहीं, एक मिनट मुझे इसको कैलकुलेट करने दो, नॉट श्योर कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस वन। इट इज 990 into 600 divide by 7 and divide by 3.14 divide by 0.25 square, 432393, हाँ ये बन रहा है, it is 432393, so none of the above is the answer. Okay fine, समझ में आ गया करना क्या था क्वेश्चन में, मतलब प्रोपोर्शन वाला हिसाब है यहाँ पे। आपको एक पहला चीज यहाँ पे से कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। दिस इज द कन्वर्जन। ओके, एंड वॉल्यूम हमें क्लियर है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, तो उसी हिसाब से हमें 600 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से वर्ड्स निकाल लेते हैं कितने बनेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। ये ब्लैंक क्यों खाली है, होल्ड ऑन, व्हाई आर द स्लाइड्स। चलिए इतने आप ये वाला करिए।
Okay, try this question. Try this question based on TSD. Take your time. Hello, Palak. Yeah, solve this question based on TSD. Giving you some more time. And this question can be done. This is, you can say, many times you must have gone through such type of question. All right, now so let's start the question. So Ram Sham Hari went on a 100-kilometer journey. So there is 100 kilometers that they have to cover. Ram and Hari started the journey in Ram's car at the rate of 25, and while Sham is walking at 5. After some time, Hari got off and started walking at the rate of 5, and Ram went back to pick up Sham. All the three reached simultaneously. Number of hours are how much? So let's say Ram and Hari are going together. They cover some distance. So let's suppose in some time x. Okay, their speed is 25. I'm assuming x is what? The time taken, initial time. The time. X is my time in hours. So in 25, at the rate of 25, in x time, they have covered 25x kilometers. In the same x time,
Shyam is walking at the speed of 5. So in the same x time, Shyam is walking and he has covered 5x in the same time. Is this clear? Now, we can say now we have this much distance, this much gap between these two. So Ram and Hari are here right now and Shyam is here. Let me write it in right. So Ram and Hari are here, Shyam is here. Okay, there is a gap of 20x now between them. So at this moment, Hari got off and started walking at the rate of 5 now. So means Ram has to go back. Shyam is moving the same direction. And Hari is moving in the same direction. So this is the case now. So when will they meet? When will Shyam and Ravi will meet? So we can say they will meet after a certain time. The time must be same for both of them. When the time is same, distance is directly proportional to speed. So distance ratio, the ratio of the distance must be what? Their speed ratio. What is the ratio of their speed? So Shyam's speed is 5 and Ram's speed is 25. So the ratio is 1:5. So distance ratio is also 1:5. Means we have to divide this 20x. We have to divide this total distance 20x in the ratio 1:5. So I can say this 6 total ratio will represent 20x. So 1 will represent 10x by 3 and 5 will represent 50x by 3. So these are the distances covered by Shyam. This is 5x by 3. Sorry, 10x by 3. And by Ravi has covered 50x by 3. So these are the distances covered by Shyam and Ravi. And in this particular case, Shyam and Ravi meet somewhat here. And in the same time, Hari has covered some distance. So how much Hari has covered? The same distance Shyam has covered. Because Hari and Shyam speed is same, that is 5 km/h. So Hari will cover the same distance. So it means Hari has covered how much? 10x by 3. Is this much information, is this much thing clear to you? Moving to the next, we can say now that okay, let me erase this red part now. So we can say this much is the distance. Or how much is this distance? See, this is 5x. The total is 25x from here to here. We know this 10x by 3. Okay. We can say this is 100 minus 25x. Everything is clear. We can say this. We can also find this particular value. Okay, it is to us. But these are the distances covered by the respective persons. And Hari is here right now, moving in the same direction, and Shyam and Ravi in the same direction now. Okay, so we have to calculate the total time taken by them. How much is the total time taken? Let's find it out. So time taken by, let's suppose, Hari. How much is the time taken by Hari? So let's focus on Hari now. So Hari has covered how much distance? First of all, Hari has covered this much distance. This distance is covered by Hari and with the speed of 25, right? At this stage, Hari's speed is 25. So the time taken is how much? Distance divided by speed, we can say. The time is x for this particular journey. And for the remaining journey, I can say for this particular journey. So this is the distance covered by Hari with the speed of 5, right? He is traveling alone now with the speed of 5.
So the time taken is 20 minus 5x, which is 20 minus 4x. So this is the time taken by Hari in terms of x. Now similarly, I will find the time taken by anyone. Let's suppose, let me take Sham. Yeah, why not? Let me take Sham. So Sham has covered 5x first of all. So he has covered 5x with the speed of 5. Then he has covered, okay, let me take it completely now. Sham has covered 10x by 3 also. So this is the total distance covered by Sham with himself with the speed of 5. And then he covered the rest of the journey, which is 50x by 3 plus 100 minus 25x with the speed of car at the speed of 25. Understand this one part, the red part? Let me know, please. Sham has covered 50x by 3. This much 50x by 3. This is covered by Sham with in car, and this further distance in car. So this is the total distance that I have written here. So let me write it here now. Time taken by S is how much? It is, I'm dividing this equation. Let me make some space here. Okay, fine. Okay, I'm writing it here. Dividing by 5, I'm getting x plus 2x by 3. And dividing by 25, it is 2x by 3 plus 4 minus x, which is what? 4 plus 6x by 3. No, 4x by 3, sorry. Yeah. So these are the time taken by Sham and Hari in terms of x. So I'll just make them equal to one another and I'll find the value of x. So making them equal to one another, this part and this part, because the time must be same for each of them. Whatever journey they are covering, they are reaching at the same time. So I can say 4x by 3 plus 4x, it is 12x plus 16x by 3 equal to 16. I can say x equal to 3. So if x equal to 3, what is the time? 20 minus 4 into 3, that is 12. The time equals to 8. So that's our answer for this question. Yep, let me know, please. Kindly let me know. Have you understood this concept, this question? Be an active participant in the class, and it must be a two-way communication. Is this clear? Kindly confirm. Thank you. Thank you. And Palak, also, you are late today. Please join on time. Exactly, we'll start at, and most probably we'll start the Monday class at 10 p.m. Okay, we'll start at 10 p.m. from Monday onwards. And maybe we can do a 2-hour class straight or 1.5 hour class. Okay, because I guess we have just some days left before the ZET exam. So we have to increase the number of hours. All right. So now, okay, try this question. Read the question carefully and gather the information. Just find out how far is his home from the railway station. Try it out.
To do this question, the taxis plying in Vasepur have the following fare structure: rupees 20 for the first 2 kilometers, rupees 5 for every kilometer in excess of 2 kilometers and up to 10 kilometers, rupees 8 for every kilometer in excess of 10 kilometers. Bullock cart, on the other hand, charges rupees 2. Sardar Khan, okay, gangs of Vasepur, I guess. Sardar Khan takes a taxi from the Vasepur railway station to his home. On the way, at a distance of 14 from the railway station, he meets Faisal Khan. So draw the structure. Gets down from the taxi to talk to him. Later, he takes a bullock cart to reach his home. He spent total of 102. So how far is his home from the railway station? So you get C, 19 kilometer. Very good. Correct answer, C. C is correct. Very good, Shubham. This is at PYQ question. Okay, these type of question. Okay, now do not go on the length of this question. Thank you, on. Do not go on the length of this type of question. Read the question. It can be doable. Okay, do not skip. So this is a learning here. Now let's solve this question. Okay, thank you, Raw. It's the correct answer. So he has already traveled 14 kilometers. So what is the meaning? First of all, let's understand. So he's saying that for the first 2 kilometers, the charge is fixed rupees 20. Okay, it is 10 rupees per kilometer. It is not 20 rupees per kilometer. It is 20 for 2 kilometers. And then from in excess of 2 till 20, till 10 means in excess of 2 till 10 kilometers. Okay, for this particular part, rupees 5 per kilometer. And then rupees 8 for every kilometer excess of 10 means if you go beyond 10, this is 8 rupees per kilometer. So this is how these segments are divided. It is 14 kilometer he has traveled. So for the first 2 kilometers, he has paid 20 rupees. And this is 8 kilometers remaining. 2 kilometers we have already covered. Now 8 kilometers and per kilometer is 5 rupees. So it is 40 rupees. Correct. We have covered 10 kilometers, the checkpoint, and then we have to cover 4 more kilometers. So the amount would be 32 rupees. So this is in total how much? 92 rupees we have already exhausted. We have used 102 rupees in total. This is given in the question. 92 rupees we have exhausted. So the remaining amount is 10 rupees. And we have covered this. We have 10 rupees and we have taken bullock cart. And bullock cart is charging 2 rupees per kilometer. So how many kilometers did we go? 5 kilometers in that case. So in total, 14 plus 5, 19 kilometers is our answer. So this is the distance between his home and the railway station. Yes, Palak, why haven't you solved this question? What is the issue? You understand this? The meaning, maybe you get confused
beyond 10 kilometers means 8 kilometer from the starting. It is not 8 kilometer from the starting. It is 8 kilometer beyond 10 kilometers. It is 8 rupees, sorry. It is 8 rupees beyond 10 kilometers. Do not think 8 rupees is from the starting point. Okay. Okay, now okay. Here's the question. Just a moment. Yeah, try this question. Visible? Yeah. Your time starts now. Try this one. So this question is based on, we can say, AP, arithmetic sequence. We have to find the sum of four numbers. So these numbers are in an ascending, increasing AP, you can say. We have to find the sum. So I think this question can be done. Take your time. Please take your time and crack this question. Palak, you can still crack this question. You just have to solve. What is an AP? The difference between two terms is same. The common difference. Okay, no problem. Just keep on practicing the questions. This fear will get rid of. So have you done? Let's start the question now. So these four terms are in AP. Please continue your solution. So in AP, we have to find the common difference. Common difference is same between the two terms. So let's just find the common difference, nothing else.
Once we know the variables, we will get the sum. So the difference between these two terms is how much? It is 17 minus x. This is the difference between these two. How much is the difference here? So I'm making the difference same. Okay, this is increasing. Okay, so if this is an increasing order, means going towards right, the values are increasing. So I'm subtracting left from the right part, and if I subtract this, it is 3x minus y square minus 19, and if I subtract these two terms, so this is getting cancelled. It is 2y square minus 28. So let's just make them same. If I make them same, I am getting y square equal to 4x minus 36. Yes. And if I make them same, I'm getting 3x is minus 9. Yeah, I'm getting this. So this is further can be said like this. So I'll just substitute this value in the first equation, solving these two equations now. Substituting the value, x value is 4y square minus 3 minus 36. So it is 3y square, and this is 12 minus 12, and this minus 24, it is 24. X is y square minus 3, 4y square, this is 3y square, and this is minus 12. Oh, sorry, it would be added. Minus 12 minus 36 minus 48, and there it will be 48. So it is y square equal to 16. So y equal to plus minus 4. Once I get the y value, I will plug it back to find the x. It is 16 minus 3, 13. So I get the unknown values. That's it. a plus d करके होगा क्या? हाँ वही बात है, a प्लस डी ही है ये चीज. मैंने बस कॉमन डिफरेंस ही तो निकाला है. फर्स्ट टर्म वो रख लो आप, सेकंड टर्म को a प्लस डी मान लो, तो d तो निकाल रहा हूं मैं डिफरेंस करके, है ना? एक ही बात है. तो sum of all the four numbers we have to find. तो when you add all the numbers, इन सारे numbers को अगर मैं add करता हूँ, what I am getting here, I am getting 3x plus 3x plus x, 7x. y square कट जाएगा, 17 minus 2, 15 minus 15. I am getting this. ओके, x ही निकालना था यहाँ पे तो बेसिकली. तो x हो गया 13 minus 15, 91 minus 15, 76. ये बन रहा है 91 minus 15, 76. ओके, डिविजिबल बाय, मुझे लगा कि तो ये 76 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. 3 से नहीं हो रहा. सम ऑफ डिजिट्स 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा. तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2. सॉरी, ऑप्शन ए. आंसर इज 2. ओके, आ गया समझ? क्वेश्चन आसान था. दिस इज दैट 2014. तो वी हैव अराइव्ड 2014 से 2010 से 2014 तक पे हम पहुंच चुके हैं. हाँ, ये आंसर है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. जस्ट अ मिनट. Yep, solve this question based on geometry.
So let's start the question now. Oh, the timer hasn't started. Okay, let's start. So this particular question, we have a quadrilateral. Let's draw quadrilateral. PQRS. PQ equals to 5. QR equals to 17. RS equal to 5 also. And TS is 9. We have to find the diagonal QS, length of diagonal QS. This QS can be what? The particular range is there. So we know this QS is what? QS is the side of a triangle. This is a triangle we have. So QS is a part of it. And we know this QS is what? QS, any side of a triangle is less than sum of its sides. So if I add 9 plus 5, it is less than 14 and greater than the difference. The difference of 9 and 5 is 4. Isn't it? Isosceles trapezium. हाँ ठीक है. You have thought it correct, Shivam. And I guess B होगा. So greater than 12 and less than 14. ठीक है आंसर. बिल्कुल ठीक है पलक. वेरी गुड. और हाँ ट्रेपेजियम से भी करता हूँ क्वेश्चन. There are 2 approaches. This is the first approach. And if I apply the same concept in this triangle, we can say that QS पे यहाँ पे क्या condition आएगी? That QS is less than 22. Sum of sides is 22 and the difference between them is 12. So applying the fundamental now, the common region, I can say 14 से छोटा होना चाहिए. अगर 14 से छोटा है तो 22 से अपने आप छोटा हो जाएगा. तो हम 14 से छोटा और 12 से बड़ा होना चाहिए. So between these two values, the QS must lie. एक कॉमन रीजन हो जाएगा मेरे पास. आगे वाला समझ में. So 12 से 14 तक लाई करेगा. Is this approach clear? ठीक है. Moving to the next approach, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. बिल्कुल ठीक है. और हमारा कौन सा आइडिया में पड़ा है? पी क्यू और आर एस इक्वल हैं, से बन जाएगा पी क्यू क्यू आर बड़ा है. ओके, द ट्रेपेजियम वुड बी समथिंग लाइक दिस, सच दैट इट इज पी क्यू आर एस. यहाँ पे ये 5 है, ये 17 है, ये 5 है और ये 9 है. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बिल्कुल बोल सकते हैं. तो लेट मी फाइंड दी हाइट. तो यहाँ पे अब मैं एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ कि 17 बनाना है ना मुझे. थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं. ये अगर 9 है और इसको अगर मैंने 4 मान लिया, देखा मैं हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ अप्रोच, टोटली हिट एंड ट्राई अप्रोच है. और ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा क्योंकि हाइट सेम है पाइथागोरस से और हमारा ये हाइपोटेनस भी सेम है. तो ये 3 हो जाएगा और सूट कर रहा है ना डेटा. देखो 9 + 8 17, एवरीथिंग फिट्स प्रॉपरली. रूट ऑफ 178 आ रहा है उससे. हाँ जी ठीक है बिल्कुल. तो फिर उसका रूट कितना होगा? 169, 13 पॉइंट समथिंग बनेगा ना. तो वही तो आंसर हो गया. वही तो निकालना है आपको कहाँ पे लाई कर रहा है. तो क्यू एस निकाल लीजिए यहाँ से ऐसे. तो ये 3 हो गया और ये टोटल कितना हो गया मेरे पास? 13. तो क्यू एस इज 169 + 9, 178 का स्क्वायर रूट. तो ये 13 पॉइंट समथिंग जाएगा ना. तो वही डी ऑप्शन में लाई करेगा. ओके फाइन. आगे समझ दोनों अप्रोच. अच्छा सोचा, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा. बिल्कुल ठीक है. हाँ बिल्कुल आपका आंसर सही था पलक. आई टोल्ड इट. आई होप अप्रोच भी ठीक है. चलो बढ़िया. हैव द कॉन्फिडेंस. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. Yep, here you go. Okay, okay. Okay, it can be.
अच्छा, ओके ओके, बढ़िया है शुभम, याद है कॉन्सेप्ट। ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना मेन एग्जाम से पहले, एंड फोकस ऑन अदर सेक्शंस आल्सो, डीएम एंड पीआरसी। व्हेन यू गूगल यू विल गेट मॉक्स, फ्री मॉक्स मिल जाएंगे इसके, के प्री वाई क्यू के, गूगल कर लेना उस चीज़ को, और टेक्स्ट मी, आई टेल यू। मॉक्स तो आपको जहाँ से मिले जो अच्छे लगे, सारे बढ़िया होते हैं मॉक्स तो, ठीक है, और बिल्कुल करो। So how did you find this question? चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिको का क्वेश्चन है, यू कैन सेंस इट आउट। चलिए करते हैं स्टार्ट। सो वी हैव टू विंडोज ऑन, एक लेडर है 30 मीटर लॉन्ग, तो एक लेडर है 30 मीटर लॉन्ग, समथिंग लाइक दिस इज अ पॉइंट ए, और इसकी हाइट कितनी यहाँ पे 26 मीटर, दिस इज 26, दिस इज 30, और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, लेट सपोज 2 थीटा। नाउ इन द सेकंड पिक्चर, ये लेडर को हमने कुछ पीछे कर दिया, समथिंग लेट से हेयर, और ये एंगल अब थीटा हो गया, जहाँ पे लेडर का लेंथ तो अभी भी 30 रहेगा, लेडर का लेंथ तो 30 रहेगा, हमें बस ये पूछा है कि ए और बी का गैप कितना आया, दिस इज वी हैव टू फाइंड। तो एंगल आधा हो चुका है यहाँ पे, चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट्स जस्ट फाइंड दिस, लेट अस से दिस इज ओ ए, ओ ए निकाल लेते हैं पहले तो ओ ए कितना हो जाएगा, आई कैन से पाइथागोरस के हिसाब से 30 का 900, 26 का 676, 676 का स्क्वायर रूट, हाउ मच इज इट, 10 में 6 का 4, 9 7 का 2, और 8 में 6 का 224, इट इज समथिंग अराउंड 15, नहीं मतलब 225 होता तो 15 हो जाता, मतलब 14.9 है, 15 मान रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेट कर लिया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को, आई हैव डन दी अप्रॉक्सीमेशन, बहुत ही ज़्यादा एरर नहीं आएगा इसमें, चलता है इसमें, क्योंकि रेंज भी आप देखो, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, 15 के करीब मैंने इसको मान लिया है। ओके, सो दिस इज 15 फॉर मी, नाउ आई विल डू व्हाट, 15 एंड 30 का तो मुझे पता है यहाँ पे डेडली कॉम्बिनेशन है, आई विल यूज कॉस थीटा, मुझे बेस पता है और हाइपोटेनस पता है, कॉस थीटा ही होता है,
15/30, तो 2 थीटा कितना आ गया, हाफ। ये हाफ कब बनता है, 60 डिग्री पे, तो थीटा इज 30 डिग्री फॉर मी। रफ अप्रोक्सीमेटेड आइडिया है, थीटा 29.9 होगा, तो 30 मान लेते हैं। एंड आई नो दिस थिंग नाउ, ए बी सी, दिस इज लेट्स से सी। तो मुझे बी सी पता है, बी सी मेरा 30 मीटर है, लेडर का लेंथ 30 मीटर है, तो मैं या फिर ओ बी निकाल लूंगा। सो आई अगेन अप्लाई दी कॉस थीटा, कॉस 30, कॉस 30 कितना हो जाएगा, ओ बी निकालना है और बी सी कितना है 30, तो आई विल फाइंड ओ बी एंड ओ बी वुड बी हाउ मच, इट इज √3/2, 15√3, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 15√3। ओ भी आ गया मेरे पास, बस ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड तो हो ही जाएगा। सो द फाइन आंसर इज, ए बी निकालना था, ए बी इक्वल्स टू ओ बी 15√3 माइनस 15, √3 का वैल्यू होता है 1.73 माइनस 1, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.73, ये कितना होगा, 5×3 = 15, और ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 3 × 38 = 39, 3 7 और 3 10.95 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, 10.95, ऑप्शन नंबर ई। ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 10.9 आ जाएगा, और तो मतलब काफ़ी रेंज ज़्यादा है ना। तरीका आया समझ में क्वेश्चन का, क्योंकि आप अगर साइन थीटा लगाते ना तो 26 और 30 का रेशो नहीं बन पाता। यहाँ पे जब आपने ये 15 निकाला तब आपका ये हाफ बन गया, और फिर वो हमें एंगल पता है कितना होता है। 13/15 से भी निकाल सकते हैं, पर उसको डेसिबल में कन्वर्ट करके राउंड ऑफ तो करना ही पड़ता, चीज़ें राउंड ऑफ करके जाएंगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये राउंड ऑफ कर देना अगर आपको ट्रिपलेट्स ना समझ में आए तो। ओके, ठीक है, आई गेस दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। आई एम गिविंग योर होमवर्क, ट्राई दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन कर लो होमवर्क में। ओके, देखो पीवाई क्यू से अब आता है नहीं आता, ये ऐसे कोई कोई कह नहीं सकता इन चीज़ों को। पीवाई क्यू क्यों होते हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसे एग्जाम्स बन रहे हैं। लाइक इफ़ यू हैव टू फाइट अ वॉर, यू हैव टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर, कैसे वो अटैक कर रहा है। इट इज सेम, अब ये अटैक कर रहा है, हमें पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हु नोस, आ जाए, कैट में भी तो आया है इस साल, तो जेट में भी देर आर होप, देर इज अ होप ऑलवेज। पर पीवाई क्यू आएंगे नहीं आएंगे डजेंट मैटर, आपको ऐसा ही कैटेगरी का क्वेश्चन मिल गया, दैट्स इट। आपको तो वो चाहिए ना कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो विल सी यू टुमारो सेम टाइम, एंड दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू एज द होमवर्क, एंड लेट्स सी कि एक क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं। सो विल सी यू, बाय, थैंक यू। एनी डाउट लेट मी नो, आई एम हियर।